क्रिएटिव चैनल्स को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आप अपडेट रहें हमारे हर वीडियो से। Hi friends, hi, hello, how are you? And thank you for watching my channel. And in last slides we have done the thermal zoning. Okay, so from today onwards we are just going to start our method. There is three different type of methods are there, but हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो करेंगे CLTD मेथड या SCL एंड CLF मेथड हीट लोड के लिए, जो इशरे का फंडामेंटल मेथड है 1997 से रजिस्टर्ड है इसके अंदर। तो हीट गेन जो बिल्डिंग्स की जो है, बिल्डिंग इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू द कूलिंग लोड इंस्टेंटली। तो ये चीज़ याद करना पड़ेगा, जो हीट गेन है जो बिल्डिंग के अंदर पे वो हम पूरी तरीके से फ़ौरन ही उसको कूलिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो CLTD मेथड जो होता है वो कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस, या SCL जो होता है सोलर कूलिंग लोड फैक्टर होता है, या CLF जो होता है कूलिंग लोड फैक्टर होता है। तो ऑल आर affect the like time lag in the conductive heat gain through the opaque exterior surface। तो इस सब के अंदर क्या है कि जो जिससे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, और सो वो उसके से जो हीट का कंडक्शंस हो रहा है या जो एक्सटीरियर सरफेस से हीट का कंडक्शंस हो रहा है, ठीक है, सो उसके अंदर जो टाइम डिले है, सेकेंड जो टाइम डिले है थर्मल स्टोरेज का कन्वर्टिंग रेडिएंट हीट जो है ना, वो कूलिंग लोड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। सो जो टाइम डिले टू स्टोरेज converting radiant heat gain to the cooling load. So this is the method allowed to cooling load calculate the manually using the multiplications factor। तो हम इसमें CLTD को हम यूज़ करते हैं कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस को। तो थ्योरेटिकली जो टेम्परेचर डिफरेंस को ही हम अकाउंट करते हैं, उसके अंदर जो कंबाइन इफेक्ट होता है इनसाइड या आउटसाइड का, एयर टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता है, या डेली टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, या सोलर रेडिएशन का डिफरेंस जो होता है, सो हीट स्टोरेज डिफरेंस we are considered in the construction assembly, and the building masses, it is affect also the orientation, tilt, month, day, okay, latitude. So this is the altitude and latitude factors is there. Okay, so basically if you don't know about the latitude, so this is the world, okay, and whatever the line is this cutting to the world these sides and going to the 0 and 90 to 0, this is called the latitude. Okay, so this is the latitude, and if there is something about altitude, okay, and altitude, it means this is the surface, and if you go for the higher is called the altitude, okay, and the longitude is like that, something if the world is like that, so if you are cutting the world like that, this is the longitude lines, okay. So this is the basic concept. So CLD factors are used for the like the conductive heat gain from the walls. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो ये वॉल है, यहाँ से हीट जा रही है, तो यहाँ से कंडक्शन से हीट अंदर आएगी। सो रूम तो खुला नहीं होता है, जिस एरिया को हमको कंडीशंस करना वो बंद होता है, तो इसमें हीट आती कहाँ से जब रूम बंद है। तो यहाँ से जो सोलर रेडिएशंस पड़ रहा है, वॉट एवर द रेडिएशंस गेन बाय द, दिस इज ट्रांसफर टू द confined room where we have to know about the cooling. So this is the major area to we gain the heat, and the appliances inside also gaining the heat. So factors like that, wall, roof, floor and glass also. So CLF is the cooling factor load, like all the radiations that enter into the condition space, okay. So CLF factors like light, occupancy, power, appliances, and SLF factor is used adjustment of transmission of heat from the glass. So this is all these things are we will consider. So heat gain building not converted, तो सबसे पहला जो आ जाता है हमारा CLD टेम्परेचर डिफरेंस को लेते हैं, सोलर कूलिंग फैक्टर्स को लेते हैं, और हमारा CLF को लेते हैं, ठीक है। थ्री चीज़ वी शुड नो अबाउट CLTD,
CLF and C. This is three things. Okay, first, second and third. This is three things you should know about the okay. So this is basically I think so very clear. एंड द एक्सटर्नल फैक्टर कूलिंग लोड. सो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. जो टोटल कूलिंग लोड जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है या इंटरनल फैक्टर जैसे होता है, एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर्स के बारे में यू कैन वॉच दिस प्रीवियस वीडियो. सो कंडक्शंस थ्रू द बिल्डिंग, थ्रू द वॉल, रूफ, फ्लोर एंड हीट ट्रांसफर थ्रू द रेडिएशंस एंड दिस इज सच एज द विंडो एंड सनलाइट ऑल आर द सेंसिबल हीट ट्रांसफर. एंड next thing is roof. So there is a basic from here we will start roofing heat transfer. Okay, so the roof के बारे में यहाँ से शुरू करेंगे. तो basic conductions जो equations होता है heat gain का, Q is equal to UA delta T. ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम देयर. तो हम रूफ से शुरू करेंगे. रूफ के अंदर में जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे Q is equal to UA delta T. तो हीट गेन इन BTU per hours एंड U is the thermal conductivity of the roof. जो भी थर्मल कंडक्टिविटी होगा रूफ का, U का, एंड Q का हीट गेन BTU per hours, एरिया ऑफ द रूफ फीट स्क्वायर में लेंगे और टेम्परेचर डिफरेंस जो हम लेंगे फ़ारेनहाइट में लेंगे. तो ये चीज़ हमें याद रखना है. हीट गेन कन्वर्ट इनटू द लाइक कूलिंग लोड यूजिंग द रूम ट्रांसफ़र फंक्शन, सोलर, एयर, temperature of the rooms with light, medium and heat thermal conductivity. So this equation is further modified as Q is equal to Q, this is the Q is equal to UACLTD. This is converted into CLTD. Okay, so this is the measure. So this is the nothing like that, where the Q is called the cooling load. The basic formula is like that. Okay, basic formula is like that. Okay, we are just converting for the cooling load. So Q is equal to cooling load, U is here the thermal conductivity of the roof, the coefficient heat transfer of the roof. Okay, coefficient heat transfer of the roof, and the A is the area of the roof. CLTD cooling temperature difference in Fahrenheit. The value determine कैसे करेंगे? टेबल से करेंगे. The table is already given in the chapter 28 ISHRE fundamental books. You can go and chapter 28 you can calculate that. You can see the table. Okay, and you just put the value inside the formula. Okay, this is the basics method of to calculate the roofing. Okay, so here is something like that. So ISHRE की जो है, सो द टिपिकल कंडीशंस लेते हैं. आउटडोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है 95 फ़ारेनहाइट होता है. जो मीन टेम्परेचर जो 85 फ़ारेनहाइट तक, हम डेली रेंज जो होता है हमारा 21 फ़ारेनहाइट. दिस इज द डेली रेंज. इक्वेशंस अप्लाई फॉर द करेक्शंस कंडीशंस is called the Q roof is equal to something corrections we are just get the very corrected. This is the corrections roof, and already we have explained this. So this is another step for the calculate the roof load. Okay, so let I will show you the I will explain you part by part. So first step to determine the roof construction, okay, and overall heat coefficients U, and you can go the chapter 28 issued in 1997 table I have mentioned here 2A4 and A24 and से अगर आप बैठ रहे हैं ना तो ये चैप्टर को डाउनलोड कर लो, उसके साथ बैठ जाओ, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आपको सारी बातें. स्टेप 2 क्या होता है कि सेलेक्ट द रूफ नंबर लाइक ISHRE 31 में दिया है, क्या टेबल 734 में दिया हुआ है, क्लोजेस्ट टू द मैचिंग. जो भी आपका रूफ का कंस्ट्रक्शन है उसके क्लोजेस्ट मैचिंग में आप ले लो और सेलेक्ट द CLTD ऑफ द रूफ. यहाँ पे जो CLTD ऑफ द रूफ दिया हुआ है फॉर द टाइम ऑफ इंटरेस्ट, जो भी टाइम ऑफ इंटरेस्ट टिपिकली आवरली दिया रहता है चैप्टर में,
उसको ले लो, करेक्शंस फैक्टर ले लो, वैल्यू जो दी रखी है, करेक्शन फैक्टर जो दे रखा है वैल्यू, वो एक होता है कि 4 लैटिट्यूड ऑन जुलाई और अगस्त का हम लेते हैं बेसिकली। इंडोर टेम्परेचर 78 फ़ारेनहाइट लेते हैं और आउटडोर को हम मैक्सिमम 95, वी विल कंसीडर अबाउट द आउटडोर 95 एंड मीन डेली लाइफ टेम्परेचर को जो 85 फ़ारेनहाइट, डेली रेंज 21 फ़ारेनहाइट के हिसाब से ले लेते हैं। सो दिस इज़ CLD करेक्ट मेथड जो होगा हमारा वो इस टाइप से हो जाएगा। ओके, CLD की रूफ करेक्ट इज़ लाइक दैट, सॉरी। सो CLD फ़ारेनहाइट में ले लेते हैं। सो करेक्ट मेथड विल बी कम लाइक दैट एंड दिस इज़ द बेसिक्स फार्मूला. So step 1 we have already discussed about that, and correct method is like that. The correct CLV, correct CLTD roof, okay, and 78 indoor temperature we have considered 78 minus TR, okay, plus TM minus 85 Fahrenheit, that daily temperature we have considered at. So what is this? 78 minus TR indoor design temperature corrections, whatever the correction we have done, outdoor design correction temperature, TR indoor room temperature, whatever the indoor, TM it mean outdoor temperature, T maximum is the maximum outdoor temperature, TM maximum minus daily range divided by 2, okay, and calculate the roof area A from the architectural plan. So do not calculate, you should know about the architectural plan, whatever the architect AutoCAD architectural plan you have, from where you take this all these things, okay. So step 4 is like that, okay. Basically you should know about the Q is equal to UA T delta T. This is the basic formula. So please subscribe my channel and thank you for watching my video. Take care, bye bye. Okay, shaking is not there.